Assalamu alaikum student. This is Satanveer, your O-level mathematics instructor from Labversity. So in the previous class we have discussed in detail about speed time graph. आज की क्लास में हम एक पास पेपर क्वेश्चन और दैट रिलेट्स टू फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द केसेस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कशन हम एक बात प्रीवियस क्लास से रिलेटेड एसोसिएट कर लें. वी हैव मेनली डिस्कस 3 की पॉइंट्स. नंबर 1, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस ये करा था कि एक्सेलरेशन रेफर्स टू ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एंड ग्रेडियंट रेफर्स टू m, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट is y2 minus y1 divided by x2 minus का x1, and we have also discussed one more approach that is rise divided by run approach. तो आज की क्लास में हम इन दोनों ही अप्रोचेस की बात करेंगे. So the second key point that we have discussed is, if you are interested to find the distance covered, so you have to find the area under speed time graph, that is area under the falling trapezium. And the third condition that we have discussed, if the speed is increasing, so obviously acceleration is positive. If we are having constant speed, acceleration is 0, and for decreasing speed we are having negative acceleration, जिसको हम retardation और deceleration भी कह रहे होते हैं. So let's begin with part A. In part A we have been asked to find acceleration for the first and second. So अगर first and second के लिए हम acceleration calculate करना चाहते हैं, so we have to find the gradient of the following line. So students, अगर इस line का आप gradient calculate करना चाहते हैं, so as we have discussed the formula y2 minus y1 by x2 minus x1 and rise by run approach. दोनों ही approaches part 1 के लिए, part A के लिए use करते हैं. For say, if we use this formula, so I have to write the coordinate of this point, that is 0, 0, and the coordinates of the following point is 10, 60. Yes or no? So this is your x1, y1, this is your x2, y2. So acceleration will be 60 minus 0 divided by 10 minus 0. So 60 divided by 10 comes out to be 6. So acceleration will be 6 meter per second square, or ms minus 2. Why I'm writing meter per second square? Because in the following case, speed, the unit of speed is meter per second and the unit of time is seconds. Now let's discuss acceleration with respect to the following formula, that is rise divided by run approach. अब देखिए what rise by run approach says. भाई अगर आप rise by run approach के accordingly calculate करना चाह रहे हैं, तो you have to consider the starting and ending point for the given case. भाई अगर इस point से आप इस point तक travel करना चाहते हैं, so how many units do you have to rise? Rise by run approach का मतलब ये है ना, this is your, if you are moving upward, मतलब from this point to that point, so this refers to positive rise. अगर आप along x axis move करते हैं and that is positive x axis, तो वो आपके पास positive run को show कर रहा होगा, and if you move backward, तो that refers to negative run. So for moving from this point to this point, I have to rise by 30 and 30, 60 units. तो अगर मैं rise by run approach के accordingly acceleration को calculate करूं, तो I'll be writing it like this way. Acceleration is equals to rise divided by run. So अगर आप rise by run के accordingly calculate करें, so you have to rise by 60 units and run by 10 units. Why 10? Because अगर आप x में देखें, so you are moving 10 units forward. So rise by run के accordingly I'll be writing 60 divided by 10 comes out to be 6. In both ways obviously you get the same answer. जिस तरह से आपको easy लग रहा है आप accordingly solve कर सकते हैं. Now discussing second condition, retardation for car journey. अब भाई वो term use कर रहा है retardation. हमने डिटेल में डिस्कस करा था. मैं रिटार्डेशन का हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का हूँ और डी एक्सेलरेशन का हूँ, ऑल रेफर्स टू सेम केस. अब देखें उसने टर्म रिटार्डेशन यूज करी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं दिस रेफर्स टू रिटार्डेशन, नो दिस इज सिंपली एक्सेलरेशन. दिस रेफर्स टू रिटार्डेशन, ऑब्वियसली नो बिकॉज दैट इज जीरो एक्सेलरेशन. तो ऑब्वियसली ये पार्ट आपके पास रिटार्डेशन को शो कर रहा होगा. सो इन पार्ट नंबर बी, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट रिटार्डेशन, सो फॉर कैलकुलेटिंग रिटार्डेशन let's directly calculate the following by rise by run approach.
So if you are using rise by run approach, so you have to consider any 2 points. I am considering the following 2 points. To travel from this point to this point, how many units do I have to rise? I have to rise by this much units, and this much unit refers to 60 units. तो this much unit refers to 60 unit. ये आपके पास 60 unit को show कर रहा होगा. And how many unit run? So obviously for traveling from this to this is this much distance. आपके पास ये 20 and 30 के between I am writing 25. This refers to 5 units. So obviously how many unit rise? This refers to 60 unit rise. And how many unit run? This refers to this much unit run. और ये यूनिट रन आपके पास कितना होगा? दिस इज 5 यूनिट रन. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिंस आई एम मूविंग अपवर्ड तो दैट रेफर्स टू पॉजिटिव 60. सिंस आई एम मूविंग बैकवर्ड 5 यूनिट्स तो दैट रेफर्स टू नेगेटिव 5. सो फाइनली इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव 12 मीटर per second square. However, there are few students who are having problem in this rise by run approach. तो अब जल्दी से इसको दूसरे alternate method से भी देख लेते हैं. If you write the coordinates of following point, that is 25, 0. If you write the coordinates of the following point, that is 20, 60. तो अगर आप y2 minus y1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, that is this one. So this will be 60 minus 0. This will be 60 minus 0 and 20 minus 25. 20 minus 25. On simplification, this comes out to be 60 by negative 5. Obviously, on simplification, negative 12 meter per second square. So hopefully, I am clear up till here. Now, student discussing part number 3. Distance covered in first and second. बात हो रही है भाई first and second की. So if they are like talking about first and second, so first and second के अगर आप distance की बात करें, so it means as we have discussed the formula, area under speed time graph refers to distance covered. तो इसका मतलब आपने इस region के area को calculate करना होगा. And following region is definitely what? Triangle. So अगर part C में आप first 10 सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया एंड एरिया ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली ट्राइंगल. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, द ट्राइंगल दैट इज बीन ड्रॉन इज समहाउ लाइक दिस. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक शॉर्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई उस ट्राइंगल की बेस क्या होगी. बेस मस्ट बी फ्रॉम हेयर टिल हेयर. And what's the distance of base? Base का distance इस केस में 10 units होगा. And what is height? अगर आप height की बात करें, height is from there till there is up till 60 units. So you are going to apply the formula for area of triangle, that is half multiplied by base, that is 10 into 60. And if you simplify for the following condition, this will be 2 times 5. 5 times 6 is 30, so 300 meter. So area under the graph comes out to be 300, and 300 meter will be the distance for the first 10 second. Now in part D you have been asked to find the total distance. अब अगर वो total distance covered की बात कर रहा है, so for finding total distance covered, it simply means that you have to calculate under area under the following trapezium. इस complete trapezium का area calculate करना पड़ेगा including the following part. अब देखिए student, there are two approaches. कुछ students इसको इस तरह से कर रहे होते हैं. Number one, they have calculated the area for the first triangle that we have already calculated, that comes out to be 300 meter. Then वो इस पार्ट को भी बाइफरकेट करते हैं इनटू अनदर ट्राइंगल, दैट इज दिस वन, और फिर वो फाइनली इसको रेक्टेंगल कंसिडर करके आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द 3 एरियाज एड ऑन कर रहे होते हैं. इट्स टोटली अप टू यू, वट एवर वे यू विल बी यूजिंग, इन ऑल ऑफ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर. तो भाई मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच यूज करूंगा फॉर पार्टी, एंड फॉर पार्टी डिस्टेंस कवर्ड रेफर्स टू एरिया, और अब के केस में एरिया होगा अंडर द trapezium. Now the formula for finding area under the trapezium is 1 upon 2 sum of parallel sides multiply by height.
तो भाई अगर मैं यहाँ पे पैरेलल साइड्स की बात करूं, सो वन पैरेलल साइड इज फ्रॉम देयर टिल देयर एंड अदर पैरेलल साइड इज फ्रॉम देयर टिल देयर। भाई एक पैरेलल साइड वो हो गई, एंड अदर पैरेलल साइड इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर। दिस साइड इज ऑफ 25 यूनिट्स and this side is of from 10 till 20 like 10 units। तो अगर आप sum of parallel sides की बात करें तो sum of parallel side अभी ये केस में हो जाएगा half multiply by what is sum of parallel side? This is 25 and this is 10, so 25 added with 10। Now let's talk about height. Height must be perpendicular distance between the parallel side. So perpendicular distance between the parallel side will be this one, that is 60। तो आप यहाँ पे 60 लिख देंगे। Now just simplify it according to the given condition। 25 plus 10 comes out to be 35 और obviously आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। So I am just solving and writing the final answer, that is 35 350 350 times 3 comes out to be 1050। 350 times 10, 1050 meters। So that's what we have discussed up till here, that is total distance covered। Now the last part is the average speed of a journey। Now to find the average speed of a journey, I am solving it here in a clear space, average speed of a journey। Whenever the examiner ask you to find the average speed of a journey, so average speed का मतलब simply speed। अगर आप speed की बात करें तो speed आप कैसे calculate करते हैं? You have discussed this formula in junior classes as well। For finding speed आपने जो formula junior classes तक discuss करा था, that is speed can be calculated by using the following formula, that is distance divided by time taken। अगर मैं इसी स्पीड को एवरेज स्पीड में कन्वर्ट कर देता हूं, सो व्हाट्स द डिफरेंस फॉर्मूला, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसी स्पीड को आप एवरेज स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे, सो दिस डिस्टेंस बिकम्स टोटल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस नहीं रहेगा, दिस बिकम्स टोटल डिस्टेंस, एंड अब ये टाइम नहीं रहेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू टोटल टाइम। सो इफ यू divide total distance by the value of total time, in that case you will get average speed। Now the student, आपके पास जब भी एग्जामिनर एवरेज स्पीड की बात कर रहा होता है, सो ऑब्वियसली इन द प्रीवियस पार्ट हमने देखा कि उसने टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कराई है। सो टोटल डिस्टेंस दैट वी हैड कवर्ड इज 1050 meters, so this is 1050 meters, and the total time of the following journey is divided by 25, because time हम along x axis देख लेंगे, that is 25। so if you just divide and cancel out the values, so obviously after simplification and after cancellation this will definitely comes out to be 42। so speed was given in meter, time was given in second, so this comes out to be 42 meter per second, that is the answer of our average speed। So hopefully student, all of you are clear up till here। Now just recap all the given condition so that in next class we will discuss one more or few more past paper question। The key point is, if you are interested to find acceleration, so you have to find the gradient of speed time graph। Number 2, if you are interested to find distance covered, so you have to find the area under speed time graph, not distance time graph, area under speed time graph। Last one, if you are interested to find average speed, so total distance divided by total time taken। Increasing speed होगी, acceleration must be positive। Constant speed, acceleration must be 0। Decrease in speed, that refers to deceleration, means acceleration negative होगी। So student, hopefully you have learned lot of things about kinematics। See you in next session। Thank you।